dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss question answers of class 6 chapter 13. So let us start with the fill in the blanks. First one is the magnetic materials which do not get attracted towards a magnet are called non-magnetic materials. The bar magnet is an example of a man-made magnet. Third one is even the smallest piece of a bar magnet has two poles. Fourth is Earth has its magnetic north towards its geographical south pole. Fifth is magnets have been used for separating purposes. आपने देखा होगा कि magnets को use किया जाता है to separate magnetic substances from the garbage. Now true and false. First is naturally occurring magnets are called lodestones. It's true. Second is an aluminum foil would get attracted by a magnet. This is false because aluminum is not a magnetic substance. Third is bar magnet have a north-seeking pole as well as south-seeking pole. This statement is correct, so we put true. Fourth is two magnetic poles of same kind attract each other. This statement is false because two magnetic poles of same kind repel each other. Fifth is when two magnets are moved farther apart each other, the forces that attract or repel them tend to become stronger. जब दो मैग्नेट्स को दूर हटाया जाए तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम हो जाता है, लेकिन स्टेटमेंट में दिया गया है कि वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है, इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है. Tick the correct option. The magnetic material that was discovered first of all is lodestone. Second is a magnet can attract an iron nail. Glass object, flower, book and iron nail में से वो iron nail को attract कर सकता है, करता है. Third is a material that is often used to make a temporary magnet is soft iron. Fourth is when we suspend a bar magnet from a thread, it comes to rest along the north-south direction. Fifth is a device which generally does not use a magnet is a geyser. गीज़र में पानी गर्म होता है और ज़्यादा हीट से मैग्नेट ख़राब हो जाता है. आपको पता है मैग्नेट गीज़र्स में नहीं होते हैं. D is now brief answer questions. First is state any two properties of bar magnet. bar magnet के दो properties बताने हैं. The true properties of bar magnet are attractive property and directive property. Second is maximum iron fillings stick to the two ends of a bar magnet. Why? आप जानते हैं कि किसी भी bar magnet के poles पे उसका strength strongest होता है, इसलिए उसके दोनों ends पे ज़्यादा maximum iron filling stick करते हैं. So the answer is maximum iron filling stick to the two ends of a bar magnet because strength of the bar magnet is maximum near the poles. Third question is suppose we bring the north pole of one bar magnet towards the north pole of another freely suspended bar magnet, what are we likely to observe? हम जानते हैं कि same poles अगर हों तो वे एक दूसरे को repel करते हैं. So the answer is if the north pole of one bar magnet is brought towards the north pole of another bar magnet, it repels. Fourth question is two magnets X and Y are placed as shown in the diagram. It is observed that magnet X floats above magnet Y. Give reason for this observation. आप यहाँ फिगर को देखिए, इस तरह से मैग्नेट्स को अरेंज किया गया है. Now the answer is as it is observed that magnet X floats above magnets Y, we can say that in these magnets like poles are facing each other. Because like poles repel each other whereas unlike poles attract each other. ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मे बी इनका लाइक पोल्स एक दूसरे की तरफ फेस कर रहा हो. Fifth question is you are given a knitting needle made of steel. How can you make it into a magnet? आपको एक निडल दिया हुआ है, knitting needle स्टील का बना हुआ है जिसको आपको मैग्नेट बनाना है. कैसे बनाएंगे?
The answer is a knitting needle made up of steel can be made into a magnet by placing it near a bar magnet for some time. बार मैग्नेट के पास उसको अगर हम रख दें, नीटिंग नीडल को थोड़े समय के लिए रख दें, तो थोड़े समय के बाद उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है. नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग. फर्स्ट इज परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पररी मैग्नेट. The answer is magnet which retain its magnetism for a long period of time is called permanent magnet, whereas a magnet which retain its magnetism for a short interval of time is called temporary magnet. Magnetic and non-magnetic materials. Materials which get attracted towards a magnet is called magnetic materials. ऐसे materials जो magnet की तरफ attract होते हैं उसको magnetic materials कहते हैं, और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, जैसे वुड एंड प्लास्टिक. सो द आंसर इज मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल स्टील एंड आयरन, whereas materials which do not get attracted towards a magnet are called non-magnetic materials, for example wood and plastic. Now question number 2. Two bar magnets P and Q are kept as shown in the following diagram. दो बार मैग्नेट्स रखे हुए हैं जिसमें यहाँ शो कर रहा है कि P and Q एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. Now the question is, if point C represents the south pole of magnet Q, अगर C साउथ पोल है मैग्नेट Q का, which point represents the north pole of magnet P? The answer is point A represents the north pole of magnet P. ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. इट मीन्स कि B and C दोनों लाइक पोल्स हैं. Now B is what will happen when the end D of magnet Q is brought towards the end B of magnet P. When the end D of magnet Q is brought towards the end B of magnet P, they will attract each other. Now question 3. Describe in brief the construction of a compass needle. State its main use. कंपास की नीडल का कंस्ट्रक्शन आपको डिस्क्राइब करना है और उसका एक यूज़ बताना है. The compass consists of a magnetic needle pivoted at its center and free to rotate a horizontal plane. The needle is fitted in a horizontal box having a glass cover. The compass also has a dial with directions marked on it. A magnetic compass is used to find directions. Magnetic compass का use है to find directions. Now question number 4 is draw a label diagram to show the proper way of storing two bar magnets when they are not in use. State the advantage of such a proper storing. टू बार मैग्नेट्स को जब हम स्टोर करते हैं आफ्टर यूज़, तो आप देखिए इसके अनलाइक पोल्स को हम एक जगह रखते हैं, उसके बीच में एक वुडन पीस होता है और दोनों मैग्नेट्स के पोल्स के तरफ कीपर्स होते हैं जो कि सॉफ्ट आयरन का बना होता है. When the bar magnets are stored properly, they do not lose their strength. Now question number 5. Write the different ways through which magnets can be made to lose their magnetism. The answer is magnet can be made to lose their magnetic property if heated, hammered or dropped from a height. अगर किसी मैग्नेट को हम हीट कर दें या उसे हथौड़े से मारें या उसे बार बार गिराएं तो वह अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करता है. Question 6 is Anushka saw a steel clip at the bottom of a very shallow puddle of water. She used a magnet to take out this clip without wetting her hands or the magnet. Describe how she must have done this. अनुष्ठा ने कैसे स्टील क्लिप एक बहुत ही कम पानी वाले गड्ढे से निकाला. The answer is she must have brought the pole of the magnet near the steel clip just above the level of water so that the clip gets attracted to the magnet. मैग्नेट के पोल से क्लिप को अट्रैक्ट करके वो उसके पास आकर चिपक जाएगा बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
और क्लिप पानी से बाहर आ जाएगा। नाउ द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। हियर इज द शॉर्ट स्टोरी। Aryan, the son of an army man, always behaved towards others in a polite, helpful and considerate way. आर्यन एक आर्मी मैन का बच्चा है, बेटा है, और वह दूसरों के प्रति बहुत ही पोलाइट, हेल्पफुल एंड कंसिडरेट वे में बिहेव करता है। ही वॉज ऑल्सो अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन बॉय। वह बहुत ही हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन बॉय है। His father was transferred to a new location. He too had to move to a new school. He soon had many friends in his new school. उसके फादर का ट्रांसफ़र एक नए जगह पे हो जाता है और पिताजी के साथ साथ वह भी नए स्कूल में चला जाता है, और नए स्कूल में जाने के बाद बहुत जल्दी ही आर्यन अपने दोस्त बना लेता है। His teachers would often say Aryan's personality helped him to attract friends in same way as a magnet attract iron object towards it. उसके टीचर्स ने उसके बिहेवियर के बारे में बताया कि आर्यन की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वह अपने फ्रेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वैसे ही जैसे कि एक मैग्नेट दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। नाउ क्वेश्चन 1 इज स्टेट द क्वालिटीज ऑफ आर्यन्स पर्सनैलिटी दैट you would yourself like to have. The answer is the qualities of Aryan's personality that I would like to have are politeness, helpful nature, hard work and discipline. Second question is state one practical use of a magnet's property of attracting iron objects. The answer is magnet's property of attracting iron objects is used practically to take out iron objects from garbage. This was all about the question answers. I hope you all understand.